Human beings are rational beings. They, by virtue of their being human, possess certain basic, inherent, and inalienable rights which are commonly known as human right. मनुष्य तर्कसंगत प्राणी है। वे अपने मानव होने के कारण कुछ बुनियादी, अंतर्निहित और अयोग्य अधिकार हैं जिन्हें आमतौर पर मानव अधिकार के रूप में जाना जाता है। Human rights are defined as all those rights which are essential for the protection and maintenance of dignity of individuals and create conditions in which every human being can develop his personality to the fullest extent. Human rights become operative with the birth of an individual. मानवाधिकार उन सभी अधिकारों के रूप में परिभाषित किए जाते हैं जो व्यक्तियों की गरिमा की सुरक्षा और रखरखाव के लिए आवश्यक है और ऐसी स्थितियों को बनाते हैं जिनमें प्रत्येक इंसान अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित कर सकता है। मानवाधिकार एक व्यक्ति के जन्म के साथ ऑपरेटिव हो जाते हैं। These are moral claims which are inalienable and inherent in all individuals by virtue of their humanity alone, irrespective of caste, color, creed, and place of birth, sex, cultural difference, or any other consideration. Because of their immense significance to human beings, human rights are also sometimes referred to as fundamental rights, basic rights, inherent rights, natural rights, and birth rights. They are not created by any legislature through legislation and are not subject to amendment. ये नैतिक दावे हैं जो जाति, रंग, पंथ और जन्म, लिंग, सांस्कृतिक अंतर या किसी अन्य विचार के बावजूद अकेले मानवता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अविश्वसनीय और निहित हैं। मनुष्यों के लिए उनके विशाल महत्व के कारण मानवाधिकारों को कभी-कभी मौलिक अधिकार, बुनियादी अधिकार, अंतर्निहित अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और जन्म अधिकारों के रूप में भी जाना जाता है। वे कानून के माध्यम से किसी भी विधायिका द्वारा नहीं बनाए जाते हैं और संशोधन के अधीन नहीं हैं। डॉक्टर जस्टिस दुर्गा दास बासु defines human rights are those minimal rights which every individual must have against the state or other public authority by virtue of his being a member of human family, irrespective of any consideration. The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948 defines human rights as rights derived from the inherent dignity of the human person. डॉक्टर जस्टिस दुर्गा दास बसु के अनुसार मानवाधिकार उन न्यूनतम अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी विचार के बावजूद मानव परिवार के सदस्य होने के कारण राज्य या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ होना चाहिए। UDHR 1948 मानवाधिकारों को मानव व्यक्ति की अंतर्निहित गरिमा से प्राप्त अधिकार के रूप में परिभाषित करती है। Characteristics and nature of human rights. The first characteristics is human rights are inalienable. Human rights are conferred on an individual due to the very nature of his existence. They are inherent in all individuals irrespective of their caste, creed, religion, sex, and nationality. Human rights are conferred to an individual even after his death. The different rituals in different religions bear testimony to this fact. मानवाधिकार अव्यवस्थित हैं। मानवाधिकारों को उनके अस्तित्व की प्रकृति के कारण किसी व्यक्ति पर प्रदान किया जाता है। वे अपने जाति, पंथ, धर्म, लिंग और राष्ट्रीयता के बावजूद सभी व्यक्तियों में निहित हैं। मानवाधिकारों को उनकी मृत्यु के बाद भी एक व्यक्ति से सम्मानित किया जाता है। विभिन्न धर्मों में विभिन्न अनुष्ठान इस तथ्य की गवाही देते हैं। The second characteristics is human rights are essential and necessary. In the absence of human rights, the moral, physical, social, and spiritual welfare of an individual is impossible. Human rights are also essential as they provide suitable conditions for material and moral upliftment of the people.
2. मानवाधिकार जरूरी और आवश्यक हैं। मानवाधिकारों की अनुपस्थिति में किसी व्यक्ति के नैतिक, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण असंभव है। मानवाधिकार भी आवश्यक है क्योंकि वे लोगों के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए उपयुक्त स्थितियां प्रदान करते हैं। Human rights are in connection with human dignity to treat another individual with dignity irrespective of the fact that the person is a male or female, rich or poor, etc. is concerned with human dignity. For example, in 1993, India has enacted a law that forbids the practice of carrying human excreta. This law is called Employment of Manual Scavengers and Dry Latrines Prohibition Act. Human rights are necessary for the fulfillment of purpose of life. Human life has a purpose. The term human right is applied to those conditions which are essential for the fulfillment of this purpose. No government has the power to curtail or take away the rights, which are sacrosanct, inviolable and immutable. जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मानवाधिकार आवश्यक है। मानव जीवन का उद्देश्य है। मानवाधिकार शब्द उन स्थितियों पर लागू होता है जो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। किसी भी सरकार के पास दायरे की शक्ति नहीं है या उन अधिकारों को दूर करने की शक्ति नहीं है जो सैक्रांत, अयोग्य और अपरिवर्तनीय हैं। Human rights are universal. Human rights are not a monopoly of any privileged class of people. Human rights are universal in nature, without consideration and without exception. The values such as divinity, dignity, and equality, which form the basis of these rights, are inherent in human nature. मानवाधिकार सार्वभौमिक हैं। मानवाधिकार किसी भी विशेषाधिकार वाले वर्ग के लोगों का एकाधिकार नहीं है। मानवाधिकार प्रकृति में सार्वभौमिक हैं, बिना किसी अपवाद के। दिव्यता, गरिमा और समानता जैसे मूल्य जो इन अधिकारों का आधार बनाते हैं, मानव प्रकृति में निहित हैं। Human rights are never absolute. Man is a social animal and he lives in a civic society, which always puts certain restrictions on the enjoyment of his rights and freedoms. Human rights as such are those limited powers or claims, which are contributory to the common good and which are recognized and guaranteed by the state, through its laws to the individuals. As such, each right has certain limitations.